you. What do you mean by function? Yes, guys. What do you mean by function? Yes, Dhanraj. Dhanraj, please unmute yourself. Dhanraj. Dhanraj, please unmute yourself. Dhanraj. Next, Dwarkesh. Dwarkesh, please unmute yourself. Yes, Dwarkesh. Yes, ma'am. Yes, Dwarkesh. What do you mean by function in normal terms? क्या होता है function? Yes, Dwarkesh. Dwarkesh. What do you mean by function? Hetal. Hetal. Hetal, please unmute yourself. Hetal, please unmute yourself. Hetal, please speak. Yes, ma'am. Yes, what do you mean by function? Hetal, Ma'am, please. function is a block of statements that perform a specific task. Okay, very good. Anyone else? Anyone else? मैम कैन आई से Okay. मैम एक बार फंक्शन लिख दो ना, फिर हम उसे मल्टीपल बार कॉल करा सकते हैं। फिर अगर हम फंक्शन लिखे तो कोड इजी टू रीड रहता है। Okay. So guys, tell me what is it? What do you mean by function definition? What do you mean by function definition? Yes, guys. What do you mean by function definition? Rise. Anyone in the class who knows? So, guys, a function is a group of statements that together perform a task. As you people said, yes, we can use a function number of times. A function consists of function declaration,
function definition, and the function definition provides you the actual body of the function, whatever the actual content, the actual working that of a function that we write in the function definition. And in the function declaration tells the compiler about the function name, return type, and parameter. As the function we are defined outside the main. So, as you people know that the compiler compile your program starting from the main. So, let me share you my screen with you people. Is my screen visible, guys? Hello? My screen is visible? Yes, ma'am. So let's suppose you people are writing some function int sum. This is the body of your function. And then here somehow you are writing your main section. Int main, and this is your main section. As you people know that when the compiler compiles your program, it will start the compiling your program for this line from main. So it will compile this whole section, and if we did not mention any function declaration here, so it will not know about that the particular function is exists. So we need to declare that a function so that the compiler should know that there is some function outside this main function. Main is also a function, it is nothing else. So we will declare. To declare the function, what you have to do, we have to write down the function name, its return type, if any parameters available, and after that we need to write down semicolon. For example, int sum in the function declaration. Int sum, if any variables will be there, parameters will be there, we will write down the parameters, otherwise like this, after that and semicolon. Then is one another name is known as function calling. So guys, tell me, what do you mean by a function call? What you people mean by a function calling? Yes, anyone in the batch who knows? Yes, Monil, Ronak, Umang, Vachan. Shubham, please speak. Yes, Shubham, please unmute yourself. Anyone else who knows? Rushi, what do you mean by function call? Ronak, Parth, Yash, Vachan, Dhanraj. Parth Advani, please unmute yourself and speak. Parth, यस मैम। yes, what do you mean by function call? जब हम फंक्शन को कहते हैं तो वो पहले हमने जो फंक्शन दिया था वो जो टास्क करने को दिया था वो परफॉर्म करता है।
by running. Yes, guys, function call means whenever you want to execute the function, we need a function call to call that particular function to perform a particular task. For example, in this, let's suppose I am giving here, first I am going to give some variables int a comma b, then cn a and b. After that, let's suppose I need to call that particular function. So for calling sum, let's suppose I need to give here values a comma b. So in the main section, int x comma int y. Let's suppose here what I am going to do, I am going in the function, I am going to add these numbers. So in the in the function, what I am going to do, I am going to add two particular numbers. So simply what I will do, int c equals to x plus y, and then cout c. So as you people know that what I have to do, what I done, I first define the function. This section means you are defining the function. Again, I am repeating, this section means you people are defining the function. And then there is a main section. In the main section, what I do, I initialize two variables, int a and b, of type integer, and then I took the values of a and b from the user using cn, and then I am calling that particular function. I am calling that particular function sum. So here one cheese is missing. One thing is missing. Can you tell me? Yes, guys. Is my screen visible? Hello? Guys, is my screen visible to you people? Yes, guys, here one thing is missing. If let's suppose I'm going to execute this program, so here one thing is missing. First one is your header files. So to execute this program, first I need to include the header files. IOStream, and then using namespace std. So as here int I is capital, it will not work. Here C is capital, it will not execute. Here cout is capital, it will not execute. Here again I is capital. The next thing is that you people can declare this function. I'm going to declare it globally.
So for that, int sum. There are two variables, int x and y. So in the declaration, I will use only int, then semicolon. So whenever I am going to compile this program, compiler first compile main section and then int a and b. After that, when it compile this line C in A and B, it will ask the user to enter two values. Let's suppose user is entering 3 and 7. So now the game begins here. Sum A and B. Here, what will happen? The compiler will save the current instructions. The compiler will save the results till here. Whatever the instructions we are executing till now, the compiler will save that. And then now the control goes to this function. Whenever we call the function, the compiler will directly come to this function. This its body of the function. Again, I'm saying compiler will save this particular state and then compiler will go to this particular function and load that function into memory. And now the compiler is going to compile this function. As here we are passing two values a and b. Here the value of a is 3 and the value of b is 7. So after calling the function, when we are going to function definition, the value of x will be 3 and the value of y will be 7. So here we are declaring one local variable. Here C is local variable. You people cannot use this C and x and y outside this function. We cannot use this x, y and c outside this function because their scope is only in this particular function. So here c equals to x plus y. As we know that the value of x is 3 and the value of y is 7. So here the c will be 10. So when we are going to execute, it will print 10. Understood, guys? What it is doing? First your compiler will compile your main section, and then with the main section it will goes to the scene. When we are going to call a particular function, it will save the current state and then load this particular function. And after the execute of this function, after this line, compiler will again goes to here in the main section. The compiler again load the content of the main memory and then execute the lines after that line. Understood, guys? Yes, guys, understood? Hello? So guys, here this is by mistake inverted. So yes, guys, here the concept of inline function is begin.
In the inline function, as you know that this particular function sum, it is just performing the addition of two numbers, nothing else. But to perform this one particular line, this line addition, first we need to save all the contents of the main memory. Then we have to load the content of function, and then again after the function we need to again save the content of the function, and then we need to reload the content of the main function. So simply I'm saying that when this program is executed, when the function call instruction is executed, the CPU stores the memory address and copy the argument of the functions on the stack, and then the content goes to your function. And after the function execution, again it will store the value of the functions, and then again control goes back to the main function. And this will become the overhead for the compiler when the execution time of function is less than switching the time from the main to the function. Let's suppose to execute this one particular line, your compiler is taking 1 second, and after that to store the values of main function, your compiler is taking 5 seconds. And then after performing this function, after executing this sum function, again your compiler is coming back to your main section, and again for that it is taking 10 seconds. So guys, tell me, just to perform operation of 1 second, your compiler is taking 15 seconds. Is this good practice or not? Yes guys, आपको 1 सेकंड का वर्क करना है, and to perform that 1 second work, your compiler is taking 15 seconds extra. तो अब बताओ ये फंक्शन परफॉर्म करोगे या नहीं? I'm waiting for the answer. Yes guys, again I'm repeating that आपको क्या करना है इस फंक्शन में, हमें सिर्फ क्या प्रिंट करवाना है, x एंड y को प्लस करना है. कंपाइलर इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने में लेता है 1 सेकेंड, बट पहले कंपाइलर किसको कंपाइल करेगा? मेन सेक्शन को. जैसे हमने फंक्शन को कॉल किया तो वो क्या करेगा, मेन का जितने लाइंस एग्जीक्यूट हो चुकी हैं, जो भी यहाँ तक इन बिटवीन रिजल्ट आया है, उसको स्टोर करेगा मेमोरी में. आफ्टर दैट मेन मेमोरी में किसको लोड करेगा? इस पर्टिकुलर फंक्शन को, सो दैट वो इसको परफॉर्म कर पाए. तो वो मेन मेमोरी को सेव करने में कितने सेकंड्स लेता है? 5 सेकंड्स, सिर्फ और सिर्फ ये पर्टिकुलर कंटेंट को सेव करने में. एंड आफ्टर दैट वो क्या करता है, इस वाले कंटेंट को लोड करता है मेमोरी में, इसको एग्जीक्यूट करता है, और उसके बाद फिर से इसको एग्जीक्यूशन इसकी ख़त्म होने के बाद इसको सेव करता है, एंड उसके बाद फिर से इसको लोड करता है मेमोरी में. तो उसके लिए वो ले रहा है 10 सेकेंड. सो उसको फंक्शन परफॉर्म करने में लगा ओनली 1 सेकेंड, बट जो कंटेंट को सेव करना है, रीलोड करना है, उसमें उसको लगा है 15 सेकेंड्स. सो आप मुझे बताओ, इज दिस गुड प्रैक्टिस? हमें 1 सेकेंड वर्क के लिए हमें 15 सेकेंड एक्स्ट्रा यूज करने पड़ रहे हैं.
Yes guys, according to you, is this good or not? Yes, Janish, Rushi, Vachan, Parth, Jay, Shubham, Dhanraj, Ronak, Monil. Yes guys, please speak. ऐसे चुप बैठे रहोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? Yes, घनश्याम. Guys, am I audible to you? Am I audible to you people? If I am audible guys, so please think and tell me. देखो आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, जिससे हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, पहले इतने कंटेंट को वो सेव करेगा, बिकॉज कंपाइलर आपको भी पता है लाइन बाय लाइन कंपाइल करते हैं. फर्स्ट उसने इस लाइन को कंपाइल किया, फिर इस लाइन को, फिर इस लाइन को. जैसे उसने इस लाइन को कंपाइल किया, फंक्शन को हमने क्या किया, कॉल किया. तो कंपाइलर को सेव करना पड़ेगा ना कि उसने पहले कितनी लाइंस को कंपाइल कर दिया है. तो उसने सेव किया यहाँ पे कि मैंने लास्ट ये वाली लाइन को कंपाइल किया था. उसके बाद वो यहाँ से सीधा कहाँ गया जाएगा, इधर फंक्शन में. फंक्शन को उसने लोड किया, फंक्शन को की लाइंस को उसने कंपाइल करना शुरू किया. पहले इस लाइन को, फिर इन लाइंस को कंपाइल करके वापस तो उसको जाना मेन में ही है. लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने कुछ और लिखा हुआ हो, सी आउट बाय, लाइक लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा एग्जीक्यूशन में लिखा है. तब उसको वापस यहाँ पे भी तो आना होगा ना इस लाइन को एग्जीक्यूट करने. तो जैसे उसने इस लाइन को, फंक्शन को खत्म किया, उसने फंक्शंस का जो भी रिजल्ट था उसको स्टोर किया. एंड उसके बाद वो यहाँ से सीधा कहाँ जाएगा, इस वाली लाइन में. इस वाली लाइन में एग्जीक्यूट होने के लिए कंपाइलर को याद तो होना चाहिए ना उसने पहले कौन सी लाइंस को एग्जीक्यूट कर दिया था. उसके लिए वो फिर से चेक करेगा उसने रिजल्ट कहाँ पे स्टोर किया था, कहाँ पे उसने स्टोर किया था, कि लास्ट लाइन कौन सी थी. एंड देन उस लाइन के बाद वाली लाइंस को वो एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा. मैम यस हम सर. इनपुट इनपुट ही सम में ले ले तो. नहीं वो भी ठीक है, ठीक है, हमने इनपुट भी सम में ले लिया. ये लो. इनपुट सिर्फ है ना, मेन में सिर्फ सम ही कॉल करवाने का, सम ब्रैकेट ओपन हाँ ब्रैकेट ठीक है, क्लोज ठीक है, एक सेकंड, एक सेमीकोलन. सेकंड, वेट वेट वेट, लाइक दिस. यही बोल लो ना आप लोग. हाँ, और इनपुट उसमें ही सम में ही कॉल करवा दो. हाँ, वो भी ठीक है, इनपुट हमने कर वही ले दिया, लो. हमने वो भी ठीक है कर दिया. अब यहाँ पे सीन खुद से एज्यूम कर लेना, वो भी कर दिया. बट इसमें भी देखो क्या आएगा, चाहे यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन है, बट फिर भी क्या आएगा, आपका फंक्शन या मेन से शुरू होएगा कंपाइलर कंपाइल करना. जैसे ही हमने इस वाले फंक्शन को कॉल किया, देखो कंपाइल करने के टाइम कंपाइलर को नहीं पता है कि मेन में कितनी लाइंस है. उसने फर्स्ट इस वाली लाइन को स्टोर कंपाइल किया. जैसे नेक्स्ट लाइन पे आया, क्या लिखा हुआ है, सम. अब फंक्शन को कॉल किया हुआ है, सम फंक्शन को. उसके बाद देखो कंपाइलर ने एक ही लाइन को एग्जीक्यूट किया है. यहाँ पे कंपाइलर को सेव करना पड़ेगा कि मैंने एक लाइन को एग्जीक्यूट कर दिया है, कहीं तो उसको सेव करना पड़ेगा ना, सो दैट बाद में उसको याद रहे. आफ्टर दैट क्या हुआ, वो गया इस फंक्शन में. ठीक है, उसने सब कुछ परफॉर्म कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया. ये सब करने में अब लेट्स सपोज उसको लग रहे हैं 2 सेकेंड. आफ्टर दिस अगेन कंपाइलर कहाँ पे जाएगा, आपके मेन फंक्शन में. ये वाली लाइन तो चलो ठीक है, और कुछ नहीं, उसने इसको तो एग्जीक्यूट करने जाना ही है ना.
यहाँ से एग्जीक्यूशन के बाद कंपाइलर को वापस कहाँ जाना है, मेन में। वो मेन में जाने के लिए क्या करेगा, जो भी सम का रिजल्ट आया था उन सबको स्टैक में स्टोर करेगा। स्टोर करने के बाद वो वापस कहाँ पे जाएगा, इस वाली लाइन में। अब कंपाइलर को तो याद नहीं रहा था उसने पहले लास्ट लाइन कौन सी परफॉर्म की थी, तो वो क्या करेगा, जहाँ पे उसने सेव किया होगा वो वहां पे जाएगा। वहां पे जाके वो चेक करेगा कि लास्ट लाइन तो भाई मेरी ये वाली थी और ये फंक्शन कॉलिंग वाली। उसके बाद मुझे कौन सी लाइन पे जाना है, अगर ये कमेंट्स है तो उसको ये भी तो करना ही पड़ेगा ना, बिकॉज अगर इसका कोई मीनिंग ही नहीं होता तो हम यूज ही नहीं करते इसको। वी आर यूजिंग दिस, दैट मीन्स इस क्लोजिंग ब्रैकेट का कुछ तो मीनिंग है। वो मैं बोल रही हूँ कि लेट्स सपोज ये जो पूरा इस फंक्शन को हमारा सब कुछ यहाँ पे है, इसको एग्जीक्यूट 2 सेकेंड्स लगे एंड सिर्फ उसको जो स्विचिंग की है उसने, मेन से वो किस में गया, फंक्शन में, फंक्शन से फिर से किस में आया, वो मेन में आया, वो सब करने में उसको लगे हैं 15 सेकेंड्स। तो ये बताओ अगर ऐसा कुछ होगा तो हम यूज करेंगे क्या इसको? यस गाइस टेल मी। मैम तो वो यस सर। डिफाइन डिफाइन फास्ट होगा इससे? वो हेडर के नीचे आता है डिफाइन सम कर कर हम डायरेक्ट कर सकते हैं वो वाला। नहीं वही मैं पहले तुम आप इसका बताओ, इससे हम इसको यूज करेंगे? 2 सेकंड के काम के लिए हमें 15 सेकंड एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, तो सेकंड्स आप लोगों के लिए छोटू लग रहे हैं, तो ये एज्यूम करो कि अगर आपको 2 घंटे का कोई लेक्चर है, उस 2 घंटे लेक्चर के लिए आपको 15 आवर्स एक्स्ट्रा देने पड़े, तो आप अटेंड करोगे ऐसा कुछ? यस गाइस सिंपली सेड यस और नो, उसके बाद फिर सॉल्यूशन मैं बताती हूँ। Yes, guys, simply speak yes or no. People will use or not. Yes, guys, यूज करोगे ऐसा कोई मेथड या नहीं, कुछ शॉर्टकट ढूंढोगे? Yes, guys. Rushi, Rushi, please unmute yourself. Rushi and Ronak. Rushi and Ronak, please unmute yourself. Yes, Rushi. Same question. Will you use such type of solutions in which switching between the functions is taking a lot of time rather than the function execution? Yes, Rushi and Ronak. Rushi, please speak. Yes, guys, as Rushi is saying, he will not going to perform, he will not going to use yes. But if your function execution is large, if your function is large, then we can use this method.
Hello? Hello? Am I audible, guys? Hello? Am I audible, guys? So, yes, guys. So, sorry for the network issue. So, inline function are the function used for the small functions, and rather than when we call a function switch the functions, it will directly execute that function. In simple terms, let's suppose हमने क्या किया, इनलाइन फंक्शन को बनाया. सो अदरवाइज नॉर्मल फंक्शंस में क्या होता है, जैसे ही हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो क्या आएगा फंक्शन कॉलिंग टाइम पे, दैट हम लोगों को जो मेन फंक्शन का कंटेंट है उसको क्या करना पड़ेगा, हमें सेव करना पड़ेगा. आफ्टर दैट हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, हमें फंक्शन में जाना पड़ेगा. एंड देन आफ्टर परफॉर्मिंग दैट फंक्शन अगेन हमें मेन के कंटेंट को रीस्टोर करना पड़ेगा. And if your function is small, then it will increase the overhead of your compiler. So for that, what we will do, we will directly use the inline function. So the next thing is that your compiler may ignore your inline function request when your function is containing any kind of loop, when your function contains static variable, when your function is recursive, when a function type rather than void is there and the return statement does not exist. Means if your function type is integer, float, char or any other data type rather than void, then you need to return statement should be there. And if your function is containing any kind of switch or goto statement, then your compiler will not perform inline function. So idea will be more clear with this program. So this program, let's suppose it's for the addition. So here what I am going to do, I am simply going to add these two numbers. I'm calling the function to add these two numbers. So rest it will be your normal program, but in the inline function what I will do, I will place the inline keyword at the beginning of the function. So it's the add. So when the compiler sees that it is the inline function, so this particular content, it will be placed here. These two lines are line number 5, 6 and 7 of your function. These will be placed here. So as this function is placed here, there will be no need to switch. There will be no need to switch between main function to this add function. So it will reduce the time, as this we are not going to switching, the switching time is almost 0. So with this your compilation will be fast. So understood, guys? Let me execute this. Yes, guys, understood? Anyone is having any kind of doubt?
So guys, your today's program, your first program to swap two values using call by reference and call by value. So, do you people have any idea? Do you know about call by value and call by reference? Yes guys, what do you mean by call by value and call by reference? Anyone? Difference between call by value and call by reference. So guys, in the call by value, only the copy of the values of variables is passed. So with this, the original values we cannot change the original values. Whereas in the call by reference, original values is modified because we pass the references. We pass the address of one particular variable. Understood? With this, your second program is write a function called zero smaller that is passed to int arguments by reference, and then set the smaller of two numbers to 0. What is saying that you need to create a function whose name is zero smaller, and in that particular function you need to compare two values which will be passed by call by reference. You need to pass the address of two variables, and then after the what you have to compare about the smaller number. So whatever is the smaller number, you have to set that number equals to 0. And then you need to print that number in the main function. Let's suppose you are entering two variables a and b, and the values are 5 and 9. So when you are going to pass the address of a and b to the function, that means you can change the value of a and b. So in the function, what you have to do, need to compare 5 and 9. As 5 is small, you need to set the value of a equals to 0. You need to set a equals to 0. As a is 5, which is smaller than 9. And then in the main function, you need to print that the smaller value is now 0. And the next, write a program to evaluate the following investment: V equals to P into 1 plus R into N. And then your output, it should print in the tabular form, which will give you the value for the various combination. For example, if your P is 1000, then in that case your rate of interest should be 0.10 and your N should be 1. So you need to fill the value 1000 into 1 plus 0.10 into 1. With this you need to print the value of V. V equals to, and then for the second time you
For V equals to, the P should be 2000, rate of plus 1 plus 0.12, and then here the value of n should be 2. This way you need to calculate the value of V for all these 10 values. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, and 10,000. And then your last program, write a program to obtain largest of 3 numbers using inline function. So what you can do, let's suppose in the main function you are C in A, B and C. And then in your function call, let's suppose your function name is large. Large. So now you need to create your inline function. Int A, comma, int B, comma, int C. So here what you can do, you can write one particular return statement. In that return statement, you can return the value as well as you can compare A, B and C. You can compare A, B and C and then return the largest value. So guys, please perform these 4 programs.